Hello viewers, in this tutorial we are going to learn components of Windows operating system. So let's start. What is desktop screen? The desktop is the main screen area that you see after you turn on your computer and log on to Windows. Like the top of an actual desk, it serves as a surface for your work. Viewers, when we log into the computer, जब भी हम log in करते हैं कंप्यूटर पे तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमें नज़र आती है हम उसे डेस्कटॉप कहते हैं. It contains icons and taskbar. It's same like top of a study table where we arrange the things and start working. Desktop is divided into few sections. Those are icons, start button, taskbar and notification area. Let's discuss them one by one. Icon. Icon is a small graphical representation of a program or file. Icon is a small image which represents particular program or file or function of a computer. जब भी हम कंप्यूटर के ऊपर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे या कोई फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो उस फाइल के नेम के साथ उसका एक आइकन अटैच्ड होता है जो उस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है. मोस्ट कॉमन आइकन्स ऑन एनी डेस्कटॉप आर दिस पीसी, रिसाइकल बिन एंड कंट्रोल पैनल. Start button. The start button allows users to access their computer programs. It is displayed at lower left corner of the Windows. This is used to display applications or open programs or change settings or shut down the computer. कंप्यूटर के ऊपर हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं. इस पर क्लिक करके हम किसी भी एप्लीकेशंस को व्यू कर सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं और हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं. टास्क बार. The taskbar is the access point for programs displayed on the desktop. Viewers, as you know that Windows is multitasking operating system. हम Windows के ऊपर काम करते हुए बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं. जब हम डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो उन एप्लीकेशंस के आइकन टास्क बार में शो होता है और जब हम उस एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं तो वो आइकन टास्क बार से रिमूव हो जाता है. टास्क बार के अंदर हम इन एप्लीकेशंस को क्विकली एक्सेस करते हैं और हम इन एप्लीकेशंस में स्विचिंग करते हैं, यानी एक टाइम पे एक एप्लीकेशन को यूज़ करके फिर उसे मिनिमाइज़ करके किसी और एप्लीकेशन के अंदर काम भी करते हैं. नोटिफिकेशन एरिया. द नोटिफिकेशन एरिया आल्सो कॉल्ड द सिस्टम ट्रे is located in the Windows taskbar, nearly at the bottom right corner. It contains miniature icons for easy access to system functions such as antivirus settings, printer, modem, sound volume and battery status. नोटिफिकेशन एरिया स्क्रीन के राइट बॉटम में शो होता है. इस एरिया के अंदर एंटीवायरस की सेटिंग्स, इंटरनेट कनेक्शंस या ब्लूटूथ की कनेक्शंस के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो शो होते हैं. हम इस नोटिफिकेशन एरिया को सिस्टम ट्रे भी कहते हैं. What is folder? A folder is the virtual location for applications, documents, data or other subfolders. Folders help in storing and organizing files and data in the computer. जब भी हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर उन एप्लीकेशंस को अलग अलग फ़ोल्डर्स के अंदर सेव किया जाता है ताकि हम उन्हें ईजिली एक्सेस कर सकें. फॉर इंस्टेंस मैं एक मेन फ़ोल्डर बनाता हूँ सब्जेक्ट्स का और उसके अंदर सब फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ताकि मैं उनके अंदर फाइल्स को अच्छे तरीके से होल्ड कर सकूं और फिर उन्हें ईजिली एक्सेस कर सकूं. फोल्डर्स आर कंटेनर्स. हम फोल्डर्स के अंदर अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके स्टोर करते हैं या फिर सेव करते हैं. व्हाट इज़ फाइल? अ फाइल इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स डेटा, इंफॉर्मेशन, सेटिंग्स और कमांड्स यूज विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम. फाइल इंफॉर्मेशन या डेटा को होल्ड करता है. कंप्यूटर के अंदर जब भी हम किसी एप्लीकेशन के अंदर काम करेंगे तो उस पर्टिकुलर डेटा या इन्फॉर्मेशन को फाइल की शेप में सेव करते हैं. डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ डिफरेंट आइकन्स अटैच्ड होते हैं. स्क्रीन पे मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं. एक फ़ाइल माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड को यूज़ करके बनाई है जिसमें उसका आइकन और फाइल नेम है. सेकंड फ़ाइल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए बनाई है, उसमें उस फाइल का आइकन और प्रेजेंटेशन का या फाइल का नेम है. इस तरह हम जिस भी एप्लीकेशन के अंदर काम करते हैं उस एप्लीकेशन के नाम के साथ एक स्पेसिफिक आइकन अटैच होता है और उसी आइकन के बेस पे हम उस फाइल को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करते हैं. वेल दैट्स ऑल अबाउट दिस ट्यूटोरियल. आई विल सी यू इन नेक्स्ट. थैंक यू.